Hello, bachcho. Let us look into the question. The question is asking us to describe the feeding mechanism and the process of digestion in Paramecium. Let us look into it. So, the key concept that we would be discussing it is about the feeding habit and the digestion of Paramecium. Right? First of all, we'll be understanding that Paramecium belongs to protists, right? And phylum Celiophora. It consists all over the body, right? And it belongs to the protist group. Apart from that, the feeding habit and digestion is that Paramecium is a holozoic organism. That means it feeds upon protozoans, bacteria, small animals, and the fruits and vegetables also, fruits, vegetables, or you can say plants of present suspended in the water. Suspended in the water bodies. Now, during the process of feeding, they do not swim. First of all, how the process of feeding take place कि जो ये paramecium रहता है, this is the paramecium, right? This is the paramecium and it has certain vacuoles that undergo cyclosis. And this is a cytopront, the anal opening. Apart from that, इस region की बात करें हम तो this is cytostome. Cytostome. Apart from that, over here there are certain layers, and this region is pharynx, cytopharynx. यहाँ की बात करें, this is oral groove, जहाँ से food enter करता है, और this region is called as vestibule. This region is called as buccal cavity, and this entire setup is called as forming food vacuole. Food vacuole. Apart from that, the cilia is also responsible in the mechanism of feeding and digestion. So we'll be drawing this as well. Right? अब एग्जैक्टली ये प्रोसेस ऑफ फीडिंग कैसे होता है कि जहां पे पहले तो फूड प्रेजेंट है वहां द पैरामीशियम शिफ्ट्स इटसेल्फ और वहां पे फूड सपोज दिस इज वाटर and it consists of particles of food. Now what happens कि सीलिया अपने प्रोसेस यानी कि बीटिंग फैशन की वजह से ये फूड को इस ओरल ग्रूव की तरफ भेजती है, राइट? और यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है जिसमें कि लार्जर पार्टिकल्स जो रहते हैं वो इस डायरेक्शन से होके दे गेट आउटसाइड, और जो स्मॉलर पार्टिकल इंजेस्टेबल पार्टिकल रहते हैं दे एंटर दिस oral groove and through buccal cavity it enters the pharynx region. Now what happens through pharynx region, जब ये pharynx region में पहुंच जाता है तो इनका डाइजेशन कैरी आउट किया जाता है कैसे, क्योंकि ये फूड वैक्यूल है यानी कि इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट है that help in the breakdown of protein, carbohydrate and carbohydrate into simpler molecules or simpler unit, thereby the digestion take place. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट किया जाता है? इट इज सर्कुलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस, यानी कि फूड वैक्यूल इट स्ट्रीम्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन द एंडोप्लाज्म, और इसके ही थ्रू आउट द बॉडी जो न्यूट्रिशन अडाप्ट किया गया है उसको सर्कुलेट किया जाता है. So this is the process of feeding mechanism and the process of digestion that take place in Paramecium. Hope you all understood. All the best.